Mm. Mona ma'am, can you say something? Yeah, hello. Hi, welcome to this unique haircare initiative by IPCA. I'm Mona Sharma, and it's my pleasure to be your host today. This unique initiative seeks to provide expert advice for various issues connected with hair care. Our hair is a crowning glory, and it makes a world of difference to our appearance. However, our hair also requires special care and attention. Earlier, it used to be a sign of middle age problem when you used to lose hair or have a thinning of hair or bald patchy hair. However, with increasing pollution and the increase of stress in our daily work life, we are now seeing hair problems occurring even at a younger age. It is not uncommon now to see 25 to 35 years old people complaining about hair problems. Most of these problems, if identified early, can be managed well and much of the hair loss can be avoided. Today, we have with us Dr. Aruna Pawar, is a well-known dermatologist and has been practicing medicine for over many years now. She's MBBS DVD in dermatology. She specializes in dermatology, cosmetology, and trichology. She currently owns her clinic where she's working as a consultant dermatology at Skin Logic and Medicare Pune. Dr. Aruna has dedicated her career to diagnosing and treating a wide range of hair and skin conditions by providing personalized healthcare services to her patient. She takes time to listen to her patient concern and work closely with them to develop a treatment plan that meets the individual requirement. Dr. Aruna is aware of the need for the patient awareness and education about hair care and spend a lot of time in giving talks at various platforms across the country. Thank you, Dr. Aruna, for sparing your valuable time to answer a few questions on hair care for us today. Welcome to the show. Yeah, thank you for the nice introduction also. डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया when we talk about hair care in current scenario, the first and the foremost question is the hair loss, irrespective of gender and age. So can you please enlighten us today with your profound experience at what is hair loss? Yeah, actually, this is the most confusing terminology like hair loss and hair fall. Patient may also get confused with the same terminology. More of them come with the hair loss and they say कि मैम नहीं hair fall बहुत ही ज्यादा हो रहा है. And many other times there कि he thinning or volume loss can be seen in case of that. But yeah, actually hair loss is more preceding problem in our country nowadays, and both in the both gender like male and females both. Comparatively, females are having like pregnancy, delivery, the menstruation periods monthly, and the other hormonal changes also, along with this physical stress. And yeah, and males also they are having the certain pattern like genetic inheritance or something like that. So hair loss we can define as there is a thinning or volume loss, and there is a our hairline is like lagging behind like normal. In case of females, we are having the round kind of the hairline. In case of male, there is a particular like hairline we are seeing. So the recession of the hairline we can call as a hair loss. Okay, doctor. So, doctor, like you said that hair loss and the hair fall is different. So, can you please enlighten or little elaborate for us, like ताकि हमारे common लोगों को जैसे मुझे नहीं पता hair loss और hair fall के बीच में difference क्या है? Yeah, actually, hair fall, the actual hair we can see on the bed, in our towels, while washing your hair, while oiling your hair, the bunch of hair or the strands of hair we are watching everywhere now. So that is actually hair fall. So hair fall normally 30 to 40 strands per day is a normal, and more than that we can call them as a significant or something, and more than 100 is a severe hair loss, and we have to do the management for that. So that is a hair fall. And hair loss, like I previously said, it is a recession of your hairline and thinning and the volume loss we can see. And particular bald patches in case of males and females in particular regions of your scalp is getting involved. And actually we are not that much hair fall or the strands we are not seeing like the normal or something abnormal we can see. So hair fall मतलब 50 or 100 stands हर रोज गिरना and hair loss में patches आ जाना बड़े बड़े या छोटे छोटे या hair lining की thinning हो जाना is like hair loss. Yeah,
The patches Okay. are not like a completely like bald patches, but the Yes. diffuse, as we can say. Little, yeah. Okay, quite interesting. So, doctor, like, yeah, what are like significant causes for hair loss? Like, what constitutes significant hair fall? Yeah, so basically hair loss, there are the number of causes, like I said. The most important, the hereditary pattern. So in case of hereditary pattern, both maternal and paternal side, we have to check for that. So हम person को पूछ सकते हैं, the patient को पूछ सकते हैं हम कि मम्मी या पापा के दोनों साइड में, या अंकल हो दोनों साइड के, या आपके ग्रैंडफादर या उनके साइड में भी अगर हिस्ट्री है तो दैट इज द सिग्निफिकेंट हिस्ट्री, और या अंकल को है, या the siblings को है, या brothers को, या cousins को है, that all are getting involved. The hereditary factor is the most important thing. Likewise, we can also look for the nutritional health. So in case of that, the nutritional thing, that is most important thing in that. So in case of nutritional, we have to look for the all the deficiencies should have rule out, like the multiple vitamin deficiency like iron, then calcium, then vitamin D3, B12, then thyroid. Thyroid in case of hormonal, obviously we have to check. And also the some in case the adrenal hyperplasia or something, the hormonal issues are getting involved. In case of females, we have to look for the like estrogen, progesterone level, and the periods are regular or irregular or something like that. So we have to check for that. Okay. And along with that, yes, so along with that, we have to also check for the any viral diseases or something, the infections are there, like we have to check for the any infection, the previous infections we have to check, like in that the any viral diseases or something we have to check for that. Any past that अभी during covid के period में बहुत ज्यादा hair fall या hair loss के patient बहुत ज्यादा आते थे. In case of females, after the pregnancy, after the deliveries, these are the telogen free cases. तो वो जो hair loss या hair fall है, तो due to the some starvation, the physical stress to your body. Again, the some medical history or medicines history you have to check for that. So patients may have undergoing some anti-cancer drugs, anti-rheumatoid drugs, or something like that. So anti-malarial drugs, obviously. So in that case, now they face severe hair fall also. And some autoimmune disorders are also getting involved. जैसे हमने बोला था कि not a bald patches like completely. So bald patches involve the disorder is autoimmune system. मतलब क्या autoimmune disorder में क्या होता है कि our own body fight against our own cells, considering them as a foreign. So उसमें alopecia areata is most common thing. So likewise we have to look for that. Okay, quite interesting, doctor. So, doctor, what are the etiology factors for hair loss? Like, what are other factors, etiology factors that lead to hair loss? Yeah, We so talked about hair fall, and now we also want to know about hair loss. Yeah. yeah, the hair loss, it is the most important factor is obviously genetic or the hereditary pattern. The influence is also having the hair loss. The diffuse hair loss we can see after delivery. जैसे patient बोलती female patient कि नहीं मेरे बहुत घने अच्छे बाल थे लेकिन post delivery पता नहीं क्या हो गया कि there is बहुत diffuse hair loss नहीं आ रहा है. Some drugs are they are having any the particular treatment for any some the primary disease, and also the some skin disorders are also having the same pattern. So basically, hair fall and hair loss. Yeah. Okay, doctor. So, doctor, another question, like after knowing about hair fall and hair loss, difference क्या होते हैं इन दोनों के बीच में, एक दूसरा क्वेश्चन है जो हम लोगों में बहुत confusion होता है. Common people, we try to ignore our hair loss or hair fall कि ठीक है गिर ही रहे हैं या जा ही रहे हैं. So फिर भी like when one should see a dermatologist for hair loss, like कि this is the alarm sign we should visit. अगर अब नहीं हुआ तो कभी नहीं हो सकता या फिर we lose everything. Yeah. Yeah, so for the better diagnosis and better management of your hair fall or hair loss, the hair analysis should be done properly. अगर आपको doubt भी है कि नहीं पता चल रहा है this is normal or abnormal, go and visit your dermatologist, because they will analyze your hair and they will tell
कि नहीं मैम ये तो नॉर्मल है या समथिंग इट इज एबनॉर्मल एंड दैट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड और वी हैव टू डू सम ट्रीटमेंट्स और सम प्रोसीजरल ट्रीटमेंट और यू हैव टू टेक अ टैबलेट्स और समथिंग लाइक दैट. सो या सो नॉर्मली जैसे मैंने बोला कि 30 to 40 स्ट्रैंड्स पर डे इज अ नॉर्मल थिंग. लेकिन आपको नहीं समझ में आ रहा है, नहीं मोर देन 40 भी जा रहे हैं, लेकिन हर टाइम कोई भी बंदा अगर इन केस ऑफ फीमेल्स वो काउंट नहीं कर सकते, Yeah. लाइक इसमें वो कैलकुलेट करते हैं. तो दैट फॉर दैट ना, सो मोर देन 100 वी कॉल देम एज अ सिग्निफिकेंट हेयर लॉस. अगर आपको हर जगह पे बहुत ज्यादा हेयर जैसे समझ में आ रही कि नहीं मेरे हेयर वॉश का पहले कंपेरेटिवली था, पहला पास्ट हिस्ट्री अब मुझे कंपेरेटिवली ज्यादा लग रहा है, आई एम डायग्नोज विथ थायराइड और समथिंग, या मैंने अभी डिलीवरी मेरा हुआ है, या मुझे कोविड हुआ था, या पता नहीं मेरा तो घर का खाना ही बंद हो गया है, या माई द स्ट्रेस इज मोर मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर नाउ डेज, या मेरा नींद अच्छे से नहीं हो रही ड्यू टू सम वर्क और समथिंग लाइक दैट. So we have to check first with the dermatologist and they will analyze your hair and they'll tell कि yeah ma'am, yeah sir, yeah this is normal, yeah, this is abnormal, and we have to check and investigate further and have a proper treatment. Okay, doctor. So, like, doctor, you said about analysis. So, how this hair analysis is conducted? Yeah, so for that we have to always visit a board certified qualified dermatologist always. And then वहाँ पे बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स या सम टेक्नोलॉजी आज देयर, जैसे ट्राइकोस्कोप इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. ट्राइकोस्कोप या डर्मास्कोप से हम देख सकते हैं कि स्काल्प का कंडीशन कैसा है. देन हेयर का जो है अभी हमें जैसे हम सुपरफिशियली दिखते हैं, मॉर्फोलॉजिकली दिखते हैं, सो ओनली विद द थिनिंग और वॉल्यूम लॉस वी कैन डायग्नोज कि नहीं ये तो मेरा हेयर फॉल है, हेयर लॉस है, पता नहीं क्या है, लेकिन अभी तो मेरा बहुत ही पहले से बाल भी नहीं लग रहे हैं, या मेरे पूरा ऐसे रूट से जा रहे हैं, कोई बोलता है नहीं मेरे ब्रेक होके जा रहे हैं. सो दैट इज अगेन Yeah. different entities. So we have to, with the trichoscope, we can analyze the proper scalp, any healthy, yeah, any abnormal conditions of the scalp, then density of the hair, then the interfollicular distance वगैरह, ये सब हम ट्राइकोस्कोप में देखते हैं. एंड दैट इज मैग्नीफाइंग थिंग. जैसे हमें सुपरफिशियल दिखता है वैसे नहीं, विद वी कैन से विद द लेंस जैसे हम दिखते हैं. दिस इज अगेन एडवांस टेक्नोलॉजी विद द ट्राइकोस्कोप, और हम पेशेंट को भी सामने दिखा सकते हैं. सो ही और शी कैन एनालाइज कि या मैम दिस इज द डिफरेंस एंड या माय स्कैल्प इज ग्रीजी. ऊपर से तो नहीं लग रहा था, लेकिन या आई एम वाचिंग दैट. Okay. It's quite interesting, doctor. So, doctor, are there any investigation needed for hair loss, like any kind of a test or anything for hair loss? या सो जैसे मैंने बोला कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, जैसे हमने हेरिडिटरी के बाद देखा था कि न्यूट्रिशनल कॉजेस ऑफ हेयर लॉस एंड हेयर फॉल. सो न्यूट्रिशन आर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. जैसे हम मैं पेशेंट को भी कंसल्टेशन के टाइम पे बोलती हूँ कि मल्टीविटामिन आर प्लेइंग इन अ बैक स्टेज. तो हमें नहीं समझ में आता है कि ये डिफिशियंसी रहेगा तभी मेरे हेयर फॉल हो रहा है या हेयर लॉस हो रहा है. हम डॉक्टर के पास या डर्मेटोलॉजिस्ट के पास तब भी जाते हैं व्हेन वी एक्चुअली सी द नंबर ऑफ हेयर्स और थिनिंग है, वॉल्यूम लॉस है, तभी हम जाते हैं. लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम बैक स्टेज में कौन अफेक्ट हो रहा है, मोस्ट ऑफ द टाइम मल्टीविटामिन आर मोस्ट इम्पोर्टेंट. देन योर hemoglobin levels are most important, your iron, your calcium, vitamin D3, B12, sugar should be in the normal range. Any thing like serum, हमने calcium, vitamin D3 भी most important है, iron most important है. And then we see the other hormonal test. थायराइड हम मोस्ट इम्पोर्टेंटली देखते हैं. अगर हमें लगा कि पेशेंट इज कंप्लेनिंग, इन केस ऑफ फीमेल्स भी यूजुअली आस्क कि मैम आपके मंथली साइकिल्स कैसे है, वहां पे कुछ इरेगुलरिटीज है, या ब्लड लॉस ज्यादा हो रहा है, या कुछ स्कांटी है, या समथिंग लाइक दैट, या इरेगुलर पीरियड से. सो पीसीओएस नाउअडेज आर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. So to rule out that, we can additively do a hormonal test. तो उसमें estrogen, progesterone, LHFSH ratio, serum prolactin, anti-aging factor वगैरह हम देखते हैं to rule out the PCOS and to deal with the exact cause of hair loss. ओके, सो पहले एनालिसिस होता है, फिर इन्वेस्टिगेशन होता है, उसके बाद ट्रीटमेंट चालू होता है. ओके डॉक्टर. सो डॉक्टर, आफ्टर लाइक नाउ दैट वी नो व्हाट इज हेयर लॉस एंड डिफरेंस क्या है हेयर लॉस है हेयर फॉल के बीच में, और एनालिसिस कैसे होते हैं, टेस्ट क्या कौन से करवा सकते हैं, तो उसके बाद एक और क्वेश्चन दिमाग में आता है, दैट इज लाइक मैनेजमेंट. सो व्हाट आर द मैनेजमेंट ऑप्शन फॉर हेयर लॉस, लाइक एट होम एंड विद द डॉक्टर, what kind of management plan we can do?
ओके सो मैनेजमेंट जैसे हमने कंसल्टेशन के टाइम पे विद द काउंसलिंग आल्सो वी हैव टू आस्क अ फ्यू क्वेश्चंस टू द पेशेंट कि हाउ वी स्ट्रेस लेवल। अभी छोटा 5 इयर्स का बच्चा भी बोलता है कि बहुत सारा स्ट्रेस हो गया। सो दैट द स्ट्रेस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो यू हैव टू लुक फॉर द रूटीन, द डेली रूटीन ऑफ द पेशेंट्स कि हाउ इज योर स्लीप साइकिल, दैट लाइक 6 to 8 आवर्स डेली है क्या, दैट शुड बी रेगुलर। नहीं तो आज 11 बजे सो गए फिर 1 बजे सो गए, ऐसा नहीं चलेगा। दैट शुड बी रेगुलर एंड 6 to 8 आवर्स स्लीप होना चाहिए कंपल्सरी। देन हाइड्रेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हम बोलते हैं कि लाइक 3 to 4 liters पर डे वाटर इनटेक शुड बी देयर। along with the diet, diet is most important thing. तो diet में multiple fruits and vegetables, no obviously no spicy oily foods and no junk foods। तो वो सब हम पेशेंट को पहले बोलते हैं। along with that exercise is most important a factor in our daily routine, like the yoga, meditation, and something we have to advise to the patient for the stress management and also in case of PCOS. फिर उसके बाद हम patient को बोलते हैं some oral treatment, then some topical treatment and the procedural treatment. So oral में obviously हम investigation के बाद ही rule out करेंगे कि उनमें क्या क्या deficiency है. So along with diet containing multivitamins we give the calcium, then iron, the जो भी deficiency आएगा आपका वो उस हिसाब से हम दे सकते हैं। इन केस ऑफ विटामिन D3 और B12 के डिफिशियंसी देख के वी कैन गिव इंजेक्शंस लाइकवाइज। द डोसेज एंड विल बी डिसाइडेड विद उनका लेवल्स कैसे आए हैं उस हिसाब से। पीसीओएस है तो यू हैव टू डू अ रेफरेंस विद गायनेकोलॉजिस्ट, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट एंड विद द हेल्प ऑफ द कॉम्बिनेशन थेरेपी वी कैन guide the patient. So ये सब हो गया oral treatment में। अभी nowadays most of the time the oral minoxidil is also giving to the patient. Oral antioxidants are we are giving. Then in case of females, the combination of minoxidil and oral aldactone is most important thing. Then again for the topical treatment, obviously the minoxidil is the most important and the game changer we can say. So उनमें according to males and females we decide the dosage like 2% and the 5%. In case of females, along with the finasteride, we can give the Redensil, Procapil nowadays is more important in the demand. So according to the scalp condition, like dandruff है वहाँ पे या कुछ हमें दिखाई दिया कुछ प्राइमरी डिसऑर्डर्स है, जैसे डैंड्रफ की वजह से शाफ्ट से ब्रेक होके बाल गिरते बहुत ज्यादा, तो वो वी हैव टू ट्रीट द स्काल्प कंडीशन लाइक डैंड्रफ है, सीबोरिक डर्मेटाइटिस है, स्काल्प सोरेसिस है, तो उसके लिए अलग से टॉपिकल ट्रीटमेंट वी हैव टू डू लाइक इन द केस ऑफ शैम्पू, लोशन and like in the procedure we advise like the mesotherapy, PRP, they are the wonder in the hair loss treatment. So likewise the platelet rich plasma therapy and mesotherapy we advise to the patient. So likewise we do the management for at least 6 months with the oral dosage, oral tablets and the topical thing at home, and here in the clinic we do a mesotherapy and PRP treatment. These are the procedural treatment, platelet rich plasma to help for the hair regrowth or restoration. ओके मतलब वाइड रेंज ऑफ मैनेजमेंट प्लान है। हम हेयर लॉस लूज करें तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ रहने की जरूरत नहीं है। वी कैन विजिट आवर डॉक्टर एंड वी कैन गेट द प्लान रेडी फॉर आवरसेल्फ। And also the diet and water is important because I don't drink water. So I think now from now I'll drink water. So yeah. So doctor, like now that we have talk about management and also like analysis and investigation, earlier you said that the vitamins are also important and vitamin loss can also lead to hair loss. So can you please elaborate what is this role of multivitamins in hair loss? या तो ऑफन में पेशेंट कभी बोलते नहीं तो मैं तो ग्रीन वेजिटेबल्स खाता हूँ मैम, मैं तो सब खाता हूँ, फ्रूट्स तो हमें डेली खाते हो। आप एंटीऑक्सीडेंट्स की बात कर रहे हो लेकिन मैं तो मेरा हर थाली में तो मेरा नींबू रहता ही है हर रोज, तो दे आर डेली। सो व्हाट वी हैव टू told take to the patient कि बेसिकली द मल्टीविटामिन्स उनका बॉडी रिजर्व होना भी इम्पोर्टेंट होता है। लाइक वैसे हम कोविड के बारे में बोल सकते हैं, जिनका बॉडी रिजर्व था या समथिंग द गुड इम्यूनिटी वाले ऑल आर वी आर सर्वाइविंग हियर। जिनका immunity कम था या जिनका कुछ ऐसे फिजिकल या सब कुछ डिफिशियंसी वगैरह थे या उनको कुछ डायबिटीज या कोमॉर्बिडिटीज, वी कांट सर्वाइव देम। सो दैट इज बोथ, जिनका रिजर्व इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अगर हमें
हम बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी कंप्लेन करके आते कि मैम इन्वेस्टिगेशंस तो वी आर इन द लोअर साइड बट वी आर विद इन द रेंज। जैसे B12 का रेंज इज लाइक 200 to 1400, बट 201 भी रहेगा तो पेशेंट बोलेगा कि नहीं मेरा नॉर्मल है। तो हाँ, तो मैंने इंजेक्शन क्यों लगवाने हैं यार, मेरा डिफिशियंसी तो इतना नहीं है, मैं तो रेंज में हूँ। सो बेसिकली द लोअर साइड इज कंसिडर्ड एज अगेन एबनॉर्मल एंड वी हैव टू इन्वेस्टिगेट फॉर दैट, क्योंकि हमें बॉडी को एक्स्ट्रा रिजर्व भी चाहिए टू डील विद द हेयर फॉल एंड हेयर लॉस। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल रेंज में है तो मुझे चाहिए ही नहीं, तो मेरे पास ऑलरेडी बहुत है, या मैं डाइट के थ्रू कैसे नहीं कर सकता। बेसिकली डाइट के थ्रू हम इफ वी आर enriched with the good vitamins and good nutritious food and fruits also, but sometimes the malabsorption cases are there। मतलब हम सब खाते हैं लेकिन उसका प्रॉपर एब्सॉर्प्शन ब्लड में होना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, और उसके बाद ही अपने हेयर के रूट्स तक जाए। So basically with the treatment, with the oral tablets, we are fulfilling the daily requirement dosage of all these things. These are multivitamins. They are the per kg dose or per day dose is the required dose of your body. So to fulfill that, we have to take a nutritional supplements, and in case of tablets, or in case of injections, or some dispersible tablets are there. So we have to fulfill that, and to also to build up the extra reserve to fight with the any situations like COVID या any viral infections. ओके, क्वाइट इंटरेस्टिंग डॉक्टर। मतलब मल्टीविटामिन्स का बहुत ह्यूज रोल है, एंड अगर थोड़ा बॉर्डर लाइन भी कम है तो वी शुड टेक देम एंड गेट things sorted ताकि complications ना हो. So doctor, like you talked about mesotherapy and many other therapies, and so can you please elaborate for us like what procedural therapies are required for hair loss? Yeah, so basically, according to the analysis, hair analysis, we advise to the patient. Nowadays, the platelet-rich plasma, mesotherapy, then dermaroller treatment. These are the most thing. And the last one, the hair transplant, that will be the surgical. So in case of PRP, platelet-rich plasma, आपने कोविड या डेंगू के पेशेंट को सुना होगा कि प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन और समथिंग वाज हैपनिंग, एंड हमने बोला था कि हाँ वो बहुत चल रहा था। So basically, this plasma is rich with the platelets, and platelets are rich with the growth factors like hair growth factor, then vascular growth factor, endothelial tissue growth factor, and fibroblastic growth factor. So they are very important for the hair restoration. तो हम क्या कर रहे हैं कि पेशेंट का जैसे टेस्ट के लिए ब्लड लेते हैं उतना लाइक 8 to 9 ml ऑफ ब्लड वी आर टेकिंग, एंड वी आर सेंट्रीफ्यूजिंग विद द मशीन। और वो हम क्या कर रहे हैं कि ब्लड से प्लाज्मा सेपरेट कर। Again, it has the plasma rich, the platelet rich and platelet poor plasma. So we are injecting like the platelet rich plasma we are injecting into the hair roots. तो वो क्या होता है, भी growth factors कम थे, directly we are injecting into the roots. So that is PRP. Obviously the topical anesthesia और local ring block वो anesthesia के टाइप से वो करके हम numbness वहाँ पे create करते हैं locally only the part, and we are injecting plasma. सो इन द 3 to 4 weeks के बीच में एक ही बार हम दो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। अगेन द अदर ट्रीटमेंट इज मेसोथेरेपी। वो थोड़ा सा मेसोथेरेपी में हम क्या करते हैं कि अभी बहुत सारे पेशेंट डर जाते हैं कि ब्लड से नहीं निकालना है, मुझे मुझे डर लगता है समथिंग लाइक दैट। सो फॉर दैट वी आर इंजेक्टिंग द आर्टिफिशियल ग्रोथ फैक्टर्स, आर्टिफिशियल पेप्टाइड्स यू कैन से। तो हम वो इंजेक्ट करते हैं। सो लाइकवाइज ड्यूरिंग द प्रोसीजर वी आर क्लीनिंग द स्कैल्प प्रॉपर्ली, देन वी इंजेक्ट with the platelet-rich plasma or mesotherapy, and then we are giving the low-level laser light therapy. So basically, this light will stimulate the microcirculation there, and again, it is important to strengthen your hair. So these are the procedures. Along with that, Dermaroller is one treatment. So हम पेशेंट को एडवाइस करते घर में यूज करने के लिए भी, एंड वी कैन एडवाइस देम टू यूज इन द क्लिनिकल्स। एंड द सर्जिकल पार्ट जिनमें ये सब करके भी द रिक्वायर्ड और जो एक्सपेक्टेड उनका हेयर लाइन हो नहीं है, या बहुत ही लाइक 5 या 6 का ग्रेड लॉस है, तो उनके लिए वी आर डूइंग हेयर ट्रांसप्लांट्स और वी आर एडवाइसिंग द हेयर ट्रांसप्लांट।
ओके, सो अगर किसी को खुद का ग्रोथ फैक्टर चाहिए तो प्लाज्मा पीआरपी करवा सकते हैं। अगर खुद का ब्लड लेके डर लगता है तो आप मेसोथेरेपी के लिए जा सकते हैं, जिसमें आप सिंथेटिक ग्रोथ फैक्टर यूज करके अपने हेयर को ग्रो करा सकते हैं। क्वाइट इंटरेस्टिंग डॉक्टर। सो अनदर क्वेश्चन डॉक्टर, लाइक ये हम थेरेपीज तो करवा लें, लेकिन क्या मेल एंड फीमेल के पैटर्न हेयर लॉस में, लाइक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोग्नोसिस फॉर मेल एंड फीमेल पैटर्न हेयर लॉस? या सो बेसिकली लाइकवाइज जैसे मैंने बोला था कि हेयर लाइन इज ऑल्सो डिफरेंट इन केस ऑफ फीमेल्स, हेयर लाइन इज राउंड एंड इन केस ऑफ मेल दैट एम टिपिकल एम। जब भी रिसेशन होगा और जब भी हेयर लॉस होगा तो मार्जिन अंदर जाएगा। सो इन केस ऑफ फीमेल देयर इज अ सेंटर, जैसे बोलते हैं ना कि जो पार्टीशन है ना मैम वो थिन होने लगा है या बड़ा होने लगा, एंड बायलैटरल टेम्पोरल एरियाज आर आल्सो इन्वॉल्व इन केस ऑफ फीमेल्स। मेल में क्या रहता है कि उनका ये यहाँ से फ्रंटल रिसेशन हो जाता है, कभी कभी वर्टेक्स हो जाता है, एंड कभी कभी ऑल द पैराइटल वर्टेक्स एंड द टेम्पोरल पार्ट इज गेटिंग इन्वॉल्व। सो लाइकवाइज वैसा होता है और उसका साइंटिफिकली ग्रेडिंग है दोनों का भी, मेल एंड फीमेल पैटर्न। तो वो हिसाब से हम उनको ट्रीटमेंट एडवाइस करेंगे। या कभी कभी पेशेंट का ऐसे रहता है कि कंपेरेटिवली द मेल्स एंड फीमेल्स में थोड़ा प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं रहता है, बिकॉज द फिजिकल स्ट्रेस इन्वॉल्व ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, डिलीवरीज, cycles, then menopause, then associated some hormonal PCOS, thyroid, या adrenal hyperplasia or something associated now, even associated diabetes, यानी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। तो उनमें थोड़ा सा प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं रहता, लेकिन इन केस ऑफ मेल्स में इफ यू आर गिविंग अ प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड द न्यूट्रिशनल एंड द सपोर्टिव ट्रीटमेंट, द प्रोसीजरल ट्रीटमेंट आल्सो, सो यू कैन गेट डेफिनेटली अ गुड रिजल्ट्स। ओके ओके, सो बोथ मेल एंड फीमेल का अलग अलग होता है, एंड फॉर फीमेल दे कैन डू अर्ली इंटरवेंशन सो दैट पूरा अच्छा रिजल्ट पा सके। So, doctor, are there any more advanced therapies for hair loss, like apart from PRP and mesotherapy? या जैसे मैंने बोला कि डर्मा रोलर भी एक अच्छी ट्रीटमेंट है, एंड दैट वी कैन एडवाइज लाइक आप घर में भी वगैरह कर सकते हैं। अगेन एक्टिवा रिजेंड्रा करके एक प्रोसीजर है, तो उसमें जो पेशेंट को अगर हम मीजो या पीआरपी भी बोलेंगे ना तो भी मेक अ प्लान लाइक अबाउट 6 मंथ्स टू 1 ईयर की मंथली आपको पीआरपी करना है या 15 डेज में आपको मीजो करना है और समथिंग। डर्मा रोलर आपको यहाँ भी कर सकते हो, घर पे भी कर सकते हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट का नहीं होता है टाइम टू टाइम विजिट या फॉलो अप। जैसे हम पेशेंट कि ऐसा कुछ दे दो जो लॉन्ग टर्म के लिए रहे, लाइक अराउंड 6 मंथ्स टू एटलीस्ट 1 ईयर। तो एक्टिवा रीजनरा एक अच्छी प्रोसीजर है। उसमें हम वहां से बायोप्सी लेते, पंच बायोप्सी लेके वी आर प्रोसेसिंग विद द मशीन ऑफ एक्टिवा रीजनरा, एंड देन दे द सेपरेटेड सीरम और प्लाज्मा यू कैन से वी आर injecting onto the bulb patches. So along with the PRP, if you are doing some, it has having a wonderful results also. And जो patient जैसे बोलते हैं कि हायर एनालिसिस सब कुछ हो गया and they are shifting to abroad or something, so for that we can do the Activa Regenera. And nowadays the hair transplant is most in demand. That is again a surgical procedure. Along with the proper analysis, we have to decide the grafts, and that also should be maintained properly. Okay, so accordingly कि क्या सूट हो रहा है क्या सूट नहीं हो रहा, we can choose the treatment plan with the help of doctor. So doctor, like you said about Dermaroller, so it's like, can you please explain us more, like what is Dermaroller? It's like a needle, we acupuncture it, like what is it? So basically, Dermaroller, it has a 190, around 192 needles, and the depth can be decided like 1 mm, 1.5 mm या 2 mm तक रहती है। जनरली अराउंड 1.5 mm का हम डर्मारोलर पेशेंट को एडवाइस करते हैं, एंड वी एडवाइस वीकली ट्वाइस करने के लिए। सो इट हैज it has some the scientific procedure how to move over the scalp and over the diffuse area and the bulb patches. So at home we advise patient with the minoxidil. Basically the needles जो होते हैं ना जो penetrate करते हैं अपने scalp को, so it creates a micro injuries, and so that it stimulate your collagen proliferation, so that again a hair restoration that will help. So in the clinic also with the PRP platelet rich plasma का जो procedure रहता है, same day पे हम for the better penetration of your plasma we are doing the derma roller and we are injecting plasma, or likewise. So वैसे हम
घर पे भी बोलते हैं पेशेंट को कि ट्वाइस लाइक वेडनेसडे एंड संडे वी एडवाइस फॉर 15 to 20 minutes do a dermaroller treatment. It is an adjuvant treatment and it really help. It increases the micro injuries and then collagen proliferation and the hair restoration. Quite interesting, doctor. Doctor, you said that there are so many treatments and Dermaroller, mesotherapy, PRP, and you also said that after, if nothing is working, then hair transplant is also there. So can you please explain us like what is hair transplant? या सो बेसिकली हेयर ट्रांसप्लांट जैसे मैं पेशेंट को भी बोलती हूँ कि बहुत इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए, जैसे हम प्लांट ग्रो करते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि कहीं से भी हमको प्लांट उठाना है तो वी ऑलवेज चूज अ गुड हेल्दी प्लांट और समथिंग दो जहाँ अच्छे जगह से हम निकालते हैं. सो बेसिकली फ्रॉम द ऑक्सीपिटल पार्ट we are choosing a good hair follicles and then we are injecting we are then implanted into the diffuse or bald area जहाँ पे भी है वहाँ पे हम करते हैं. So basically hair transplant is a surgical procedure. Again it is like हम बोलते हैं कि like 12 hours या something according to your grafts. So basically hair transplant surgeon firstly प्रॉपरली हेयर मार्जिन और जैसे आपको चाहिए वैसे डिजाइन करते हैं. उस हिसाब से वो दे चूज कि नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स कितने लगेंगे एंड देन दे सी योर ऑक्सीपिटल पार्ट द बैक का जो पार्ट है दैट इज अ डोनर मतलब जहां से हम प्लांट जो ग्राफ्ट है जो निकालने वाले हैं. सो दैट शुड बी हेल्दी ना. सो वी एडवाइस पेशेंट बिफोर दैट कि आप थोड़ा सा प्लेटलेटिक प्लाज्मा या मीजो करके टू स्ट्रेंथन करो और उसके बाद एट द टाइम ऑफ सर्जरी जितने भी ग्राफ्ट्स लगेंगे we separate from there and we are injecting into the bald patches. So basically it has a two like FUT and FUE. These are the two methods. FUT follicular unit transfer हम जो ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसमें क्या करते हैं द स्ट्रिप ऑफ द स्किन वी आर वहां से निकाल के हम बाल पैचेस में लगाते हैं. तो उसमें थोड़ा सा ये रहता है कि वहां पे मार्क कभी कभी दिखता है. एंड दूसरा इज फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन मतलब हम एक एक यूनिट निकाल के देन वी आर मेकिंग अ स्लिट इनटू द रिसिपेंट एरिया एंड वी आर इंजेक्टिंग देयर. And for that and then this is the surgical procedure so we have to maintain properly. So थोड़ा सा due to anesthesia वहाँ पे infiltrative anesthesia रहता है तो थोड़ा post procedure भी ध्यान रखना जरूरी रहता है. कभी कभी edema swelling so you have to do with proper prophylactic antibiotic treatment you have to give and to restore the growth of your grafted hair. ओके सो डॉक्टर लाइक ये जो हम लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं FUE एंड FUT, तो क्या ये वही हैं जो आप हमें बता रहे हैं कि फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन लाइक थोड़ा इन हेयर ट्रांसप्लांट ओनली? या फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांट भी होता है फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन भी होता है. तो वही मैंने आपको बोला कि जो स्ट्रिप निकालते हैं डायरेक्टली और डालते हैं तो दैट इज फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांट. एंड देन फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन मतलब द इंडिविजुअल ग्राफ्ट विद द मिनी पंचेस ना वी आर वहां से निकाल के फिर वी आर इंजेक्टिंग इनटू द बाल. ओके सो इट्स अ वर्क ऑफ लाइक परफेक्शन. लाइक अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जाते हैं तो कुछ भी ऐसा रहेगा नहीं कि जो रह जाएगा. इट्स लाइक कि पैच के साथ अगर कुछ रह भी गया तो विद एक्सट्रैक्शन अलग अलग फॉलिकल्स लगा के भी आप पूरा हेयर पा सकते हो अपना. या वेरी क्वाइट इंटरेस्टिंग डॉक्टर. एंड क्या डॉक्टर इनका कोई लाइक ये हमारे खुद के ग्राफ्ट्स होते हैं तो ये कोई ग्राफ्ट रिजेक्शन तो नहीं हो पाता लाइक कि हमारी बॉडी रिजेक्ट कर दे? देखो अभी हम जो प्लांट भी कहीं पे प्लांटेशन भी कर रहे हैं तो यू चूज अ हम्म. ऑफकोर्स हेल्दी ग्राफ्ट. तो वो जो है उनका मेंटेनेंस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. जब से हमने उसको निकाला है यू हैव टू प्रोसेस दैट प्रॉपरली एंड देन वी हैव टू इंजेक्ट समवेयर. तो अगेन हम जैसे बोलते हैं कि दोनों साइड का जो है तो लोकल टिश्यू इंजरीज और समथिंग कैन हैपन एज अ कॉम्प्लिकेशन में भी इन्फेक्शन होने के चांसेस होता है. तो प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स यू हैव टू गिव. एंड पोस्ट प्रोसीजर द पोस्ट हेयर ट्रांसप्लांट मेंटेनेंस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. बहुत सारे पेशेंट Yeah, को that's another question. Yeah, so that's another question we have. Like, what is the maintenance required after hair transplant? Yeah. maintenance is most important to avoid the Yeah. any infection or something like that. Doctor, what maintenance plan is required post hair transplant? क्योंकि लोग सोचते हैं चलो अब तो बाल आ गए अब क्या मेंटेनेंस की जरूरत है. So what are those? Yeah, so Can you?
द मोस्ट बिगेस्ट मिस्टेक दे डू। उनको लगता है कि अभी तो हेयर ट्रांसप्लांट हो गया मतलब परमानेंट बाल आ गए, अभी तो कुछ नहीं, मतलब मेरा जो भी बाल एरिया तो दैट इज कवर्ड, अगेन अ गुड थिंग, बट अलॉन्ग विद दैट यू हैव टू मेंटेन प्रॉपरली। तो हम पेशेंट को पोस्ट प्रोसीजर एक तो प्रोफाइलेक्टिकली एंटीबायोटिक देते टू अवॉइड द इन्फेक्शन। तो उनका जो रूटीन चेकअप है वो इम्पोर्टेंट होता है विद द सर्जन और विद द हेयर ट्रांसप्लांट टीम। तो हम उनका फॉलोअप भी, पोस्ट प्रोसीजर हेयर वॉश इज इम्पोर्टेंट। फिर उसके बाद जो स्कैब्स वगैरह गिर जाएंगे उसके बाद वी डू फर्स्ट पीआरपी, एंड देन फॉर सब्सिक्वेंट 6 months to 1 year so we can do a platelet rich plasma again to maintain those graft। जैसे पहले भी हमने किया था तो स्ट्रेंथन योर डोनर एरिया, उसके बाद भी हम करेंगे टू मेंटेन द ग्राफ्टेड जो हमारे ट्रांसप्लांटेड हेयर है उनको मेंटेन करने के लिए। अलॉन्ग विद दैट जो भी मैंने मैनेजमेंट में ओरल टॉपिकल ट्रीटमेंट बोला था, लाइकवाइज अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पेशेंट we can start the multivitamins and topical minoxidil or something to again maintain the hair properly। so ऐसा नहीं है कि एक बार सर्जरी हो गया मतलब काम खत्म, so you have to maintain, नहीं तो फिर ऐसा नहीं हो जाना चाहिए कि दोबारा आपको करने की जरूरत है। so इस बात ओके ओके, तो दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद भी आप बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स है जो करा सकते हैं अपने बालों को हेल्दी रखने के लिए। मतलब नकली बाल नहीं है, असली बाल है जिनको आप मेंटेन कर सकते हो। Okay, very interesting, doctor. So, doctor, like, what lifestyle changes? Like, you talked about like stress, you talked about many other diet and other things. So, can you just elaborate in a whole and some like what lifestyle changes are recommended for the patient with hair loss or patient who are going to have a hair loss? Yeah, so basically the hair care routine is most important thing। हेयर केयर रूटीन मतलब क्या कि जैसे हमारा स्किन केयर रूटीन होता है तो हेयर का भी रूटीन होता है। लाइक इन केस ऑफ मेल वी एडवाइस डेली हेयर वॉश शुड बी नीडेड बिकॉज उनका हेयर का लेंथ भी छोटा होता है एंड दे कैन वॉश थरोली। इन केस ऑफ फीमेल्स अगेन ड्यू टू द मेंटेनेंस एंड लॉन्ग हेयर पैटर्न in India obviously, so we can advise them like thrice a week they have to do। and over oiling should be avoided क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि ड्यू टू अ ट्रेडिशन और समथिंग हम रात में पूरा ऐसे मसाज करके और ये सब करके देन वी यूजुअली डू अ मोर ऑफ ऑयलिंग एंड देन सुबह उसको फिर वॉश करना। बेसिकली क्या होता है कि ऑयलिंग इज नॉट द थिंग। हमें ऐसे बोला गया है हमारे दादी और ये सब ने कि ऑयल इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, बेसिकली भर नॉट भर के लगा ऑयल। लो। So not the exactly oil, but the massage is you are doing now. That is most important because more you do the massage, then it improves the microcirculation there, and again it strengthen your hair। तो oil का ऐसा कुछ रोल नहीं है। Basically, the oil will catches more dust and dirt, and the secondary infection like bacterial or fungal. Fungal infection is nothing but your dandruff, and the bacterial infection folliculitis या हम बोलते हैं ना स्काल्प एक्ने आ गए और समथिंग इची और इरिटेटेड थिंग, सो उससे और ज्यादा हेयर डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। तो हम एडवाइस करते हैं पेशेंट को अगर आपको ऑयलिंग भी करना है तो डू विद द प्रॉपर मसाज 15 to 20 minutes बिफोर। अगर आपका ऑयली ग्रीजी या डैंड्रफ कंटेनिंग स्काल्प है तो अवॉइड द ऑयलिंग। सो हेयर केयर रूटीन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपको जब भी डैंड्रफ लगा तो अगेन एंटी फंगल शैम्पूज एंड लोशंस विद द हेल्प ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट वी कैन स्टार्ट। एंड along with that the diet again I am telling your diet should be mixed like veg or non-veg or something, but eat properly। in case of मैंने जैसे बोला कि कभी कभी माल एब्सॉर्प्शन के भी चांसेस रहते हैं, so along with that you have to do a proper supplements or multivitamins you have to take, and with the guidance of the dermatologist you start applying topical things to maintain। every time minoxidil containing लगाना ही जरूरी ऐसा नहीं है, according to your hair analysis they can say, but red and seal procapil containing serums you can apply for the strength। Okay, and again stress management is most important thing। in case of PCOS भी help करेगा, and for your hair loss is also it is going to help। yoga meditation is most important thing। so basically hair care, your stress management, and it will improvement your diet, and the daily sleep and hydration is most important। Okay, quite interesting, doctor. This discussion was very informative, doctor. I'm sure our viewers would be benefited by it. So, doctor, can we take some live audience question? Yeah, Hello, doctor. How to know कि minoxidil use करना है या कोई और treatment लेना है? yeah, basically your dermatologist
वो इसका आपको ज्यादा अच्छे से हेयर एनालिसिस करके है कि जरूरी नहीं है ऐसा बोलेंगे। बिकॉज मिनॉक्सिडिल ओवर द काउंटर मत करो यूज, क्योंकि कभी कभी आपको नहीं पता चलता, इनिशियली कुछ डेज में रिएक्शनरी हेल्प और हो जाता है, लाइक 15 days to 1 month, तो पेशेंट को लगता है कि अरे ये यूज करने से तो मेरे और ज्यादा बाल जा रहे। कभी कभी पेशेंट अपने खुद से यूज करता है एंड बीच में ही छोड़ देता है, तो कभी कभी रिवर्स हेयर फॉल कैन ऑकर। So go to your dermatologist, nearby dermatologist, and properly analyze your hair and start the correct treatment. हो सकता है उसको मिनॉक्सिडिल की जरूरत ही ना हो, डॉक्टर बोले हाँ, कि वो भी हो दूसरी और सकता चीज है। की या जरूरत है। डेफिनेटली। Yeah, so better not to use, if self prescription ना करे तो better रहेगा। ओके डॉक्टर, अनदर क्वेश्चन इज, डॉक्टर हाय, मैं भी पुणे से हूँ और मैं मेनोपोजल एज पे हूँ, तो क्या मेनोपोजल एज पे हेयर लॉस होता है और इसके लिए पीआरपी ज्यादा अच्छा होता है या हार्मोनल थेरेपी? मुझे किसी ने बोला हार्मोनल थेरेपी करवा लो, और आपके अपॉइंटमेंट के लिए क्या करना होगा? अच्छा, so basically the most important thing is the combination treatment will help. अगर आपका the hair fall या hair loss का most important cause is hormonal irregulations or due to menopausal है, तो again you can start with the hair HRT with the help of your gynecologist, and along with that procedural treatment of course you can do, but the proper analysis is most important. और कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट कभी भी बहुत अच्छा रिजल्ट करता है। कभी कभी पेशेंट बोलते हैं कि नहीं मैम सिर्फ ओरल टैबलेट या ये दे दो, मुझे टॉपिकल नहीं लगाने के लिए टाइम नहीं मिलता, मैं प्रोसीजर के लिए आ नहीं सकती हूँ, तो मुझे कुछ ना कुछ स्किप करो। सो बेसिकली द कॉम्बिनेशन विल हेल्प फॉर यू। अगेन वी एडवाइस यू टू get a help of gynecologist also for the proper evaluation, and then dermatologist and gynecologist both we can uh, give you the proper treatment. ओके ओके, समटाइम्स कुछ प्रॉब्लम्स के लिए कॉम्बिनेशन ऑफ डॉक्टर्स की जरूरत लगती है। Okay, okay. Quite interesting, doctor. Another question is, doctor, my age is 54 and I'm diabetic, and I have bald hair and I want to go for transplant. Do you do transplant, and can I go for it because I have diabetes? Okay, so basically the diabetic is again a main primary disorder, and due to that she can undergoing many physical stresses or something, and again the effect on the other organs is happening, and the more is causing the hair fall and hair loss in case of her. She's a female patient, no? Yes, yes. Yeah, again, Female. the age is like menopausal age. Again, the hormonal things are also influencing her. So I'll advise start with the like do investigate it first. कि आपको अगर मल्टी विटामिन और इनका भी डिफिशियंसी, तो डू स्टार्ट अप्लाइंग टॉपिकल थिंग्स, स्टार्ट डूइंग मीजो एंड पीआरपी. आफ्टर 6 months you are not getting a positive result, and if your hairline is not as expected, you if you're wanting that, so we can think of hair transplant at last in case of female patient. Rarely in case of female patient, they do at the last, because with these changes now, she can get good results also. So being a diabetic, if your sugar is controlled, and during the surgery also we are maintaining like that, and with the help of medical physicians opinion also, we can take you on the surgery. But yeah, first we get analyzed properly, investigations and the proper oral and topical treatment and some procedures. They are very light, and the diabetes, if your sugar is maintained, it is not like a big problem. And if we are at a decision of hair transplant also, we can do with the proper sugar management. Yeah. Okay, okay. So with proper care, we can she can come and go for head transplant if she needed it. Okay, quite interesting, doctor. Because we are running out of time, I'll quickly take the last question. Yeah, yeah. या डॉक्टर, आपका क्लिनिक पुणे में क्या एग्जैक्ट किधर, आप बता सकते हैं? दूसरा, मेरी बेटी को बहुत सारे सफेद बाल है, वो सिर्फ 12 साल की है, और इस एज में सफेद बाल मेरे को समझ नहीं आ रहा उसको क्यों है, क्या इसका कोई ट्रीटमेंट है? हेयर को ब्लैक करना, इट इज अगेन अ पिगमेंट, उसमें जो होता है मेलानिन कंटेनिंग पिगमेंट, तो उसके हिसाब से कलर रहता है। तो अगर उनका वो भी देखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू 12 years,
अगर उसको कुछ डिफिशियंसी भी है मल्टीविटामिन वगैरह, वो भी हम सपोर्टिव को देते हैं। बेसिकली उसको एनालाइज अच्छे से करना पड़ेगा। एंड इफ शी हैविंग अ फैमिली हिस्ट्री लाइक मम्मी पापा के जल्दी हो गए थे ग्रे, तो वो भी है। एंड नाउ डेज अभी पहले जैसे नहीं रहा कि लाइक 45 या 50 के अबव ही हेयर ग्रे रहते, बहुत 21 या 22 के भी पेशेंट्स आते हैं। लेकिन या विद द बेस्ट टॉपिकल सीरम्स आर also in the market, and then again some oral tablets are also there, so they can help you to further। अगर आपके जो भी अभी ब्लैक हेयर है, पिगमेंटेड हेयर है, उनको ग्रे होने से बचाना हो सकता है। जो ऑलरेडी ग्रे हुए हैं उनमें भी हम ट्राई करेंगे पिगमेंट लाना, मतलब लेकिन अगेन एंड हर एज इज ऑल्सो सो स्मॉल, so most aggressive treatment we can't do, but yeah, with the help of these things we can definitely help her। And my clinic is Skinlogics and Medicare, it is located near Kothurud Depot, Pune। Okay, and I think we can Google it also. Yeah, Skinlogics and Yeah. Medicare near Kothurud Depot, Pune। Yeah. Okay, doctor. So, doctor, would you like to give a take-home message or any other suggestion to our viewers today? Yeah, the most important, do and get your hair properly analyzed with the help of good certified good dermatologist, and also according to your hair analysis, start doing any treatment। And yes, obviously with the also like stress management and the diet and lifestyle changes are most important। Hair care routine, जैसे मैंने अभी बोला था, hair care routine is most important thing। तो likewise you have to evaluate for that and do start doing changes from now only, so that your hair will be more healthier and more shiny and what we expected। Thank you so much, doctor. Thank you so much for sharing so much of knowledge and so much of information with us and answering all the questions of our viewers today. I'm sure our viewers have found the session very helpful. Thank you so much, dear doctor. It was a delight to have you, and thank you so much for your valuable time. Thank you so much। Yeah. Thank you, ladies and gentlemen, for joining us today and asking so many questions and helping us to uh, enlighten hair care in current scenario. So we are signing off for today. Thank you so much. Have a nice evening, doctor.